गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स एंड इंटरनेशनल लॉ। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रीसेंट यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस जो यूएस ने लिए हैं उससे ग्लोबल डिबेट रीइग्नाइट हुई है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस जो हैं वो कैसे यूएन लेड मल्टीलैटरल ऑर्डर को वीकन कर रही हैं। तो इंटरनेशनल जो है वो लॉ जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सोवरन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स पर फाउंडेड है और प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स पर वो बेस्ड है इन इंटर स्टेट रिलेशंस। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो कोडिफाई किए गए यूएन चार्टर में भी। आर्टिकल 2 जो है यूएन चार्टर का वो प्रोहिबिट करता है थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। और इसमें दो एक्सेप्शंस होती हैं। पहला तो कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज किया है। दूसरा, आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है अंडर आर्टिकल 51। ठीक है। तो इस लीगल फ्रेमवर्क के बावजूद पावरफुल स्टेट्स जो हैं वो अपने मिलिट्री इंटरवेंशंस को जस्टिफाई कर रही हैं आउटसाइड दीज एक्सेप्शंस। रिसेंटली हमने वेनेजुएला में देखा कि कैसे इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स को जो है वो वॉलेट किया गया। ऑपरेशन जो है एक अंडरटेक किया गया बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन के, और वो एक डायरेक्ट वायलेशन थी आर्टिकल 2 की ऑफ यूएन चार्टर। ये एक्शन ने अंडरमाइन किया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन को भी डोमेस्टिक अफेयर्स में, और फोर्सिबली इंटरवेन करके पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अ सोवरेन स्टेट में ये ऑपरेशन ने चैलेंज कर दिया लेजिटिमेसी ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को भी। अब जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है एक वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर मैकेनिज्म। जब कोल्ड वॉर होती थी तो बाइपोलर स्ट्रक्चर की वजह से कोई भी सिंगल पावर जो है वो यूनिलैटरली एक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि दो कंपीटिंग सुपर पावर्स थी। तो एक तरह से डेटरेंस रहता था अगेंस्ट यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन। चाहे वो हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में देखें, योम किपुर वॉर में देखें, तब हमको ये सुपर पावर जो है जो बाइपोलैरिटी थी इसकी वजह से ग्लोबली एक पीस देखने को मिला। तो लेकिन जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, ग्लोबल सिस्टम जो है वो एक यूनिपोलर ऑर्डर में बदल गया, जिसमें यूएस जो है वो मिलिट्री पावर बन के सामने आया। तो एक नोटेबल फीचर है कंटेम्प्रेरी यूएस फॉरेन पॉलिसी का कि वो इंक्रीजिंगली रिलाई करते हैं प्री प्रेम्प्टिव और प्रिवेंटिव मिलिट्री एक्शन पर, और जो उनका जस्टिफिकेशन होता है वो टेररिज्म, वेपन्स प्रोलिफरेशन, ट्रांसनेशनल क्राइम इसका यूज़ करते हुए वो एक्शंस लेते हैं। वेनेजुएला के केस में भी उन्होंने नार्को टेररिज्म का जो है वो एक्सक्यूज़ यूज़ किया, जो कि लीगली टेनेबल ही नहीं है। जबकि स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस का जो है वो असल में मोटिव था, खासकर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है। तो रिपीटेड जो बाईपासिंग हो रही है इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स की, इसके सीरियस इंप्लीकेशंस हैं ग्लोबल गवर्नेंस को। ये वीकन करता है अथॉरिटी ऑफ यूएन की, नॉर्मलाइज करता है यूनिलैटरलिज्म को, और सेट करता है डेंजरस प्रेसिडेंट्स फॉर अदर पावर स्टेट्स की वो ये भी फॉलो करें, जैसे चाइना और रशिया। ठीक है। इंडिया के लिए भी ये डेवलपमेंट्स प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि हम अभी तक इंटरनेशनल लॉ और मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस रखते हैं अपनी सोवरेनिटी को सेफ गार्ड रखने के लिए। लेकिन करंट ग्लोबल इन्वायरमेंट अंडरस्कोर कर रहा है नीड फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेटबैक फॉर पीएसएलवी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो का फर्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर जो है वो फेलियर में एंड हुआ है, जब पीएसएलवी C62 मिशन जो 16 सैटेलाइट्स लेकर जा रहा था वो ऑर्बिट पे नहीं पहुंच पाया। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव फेलियर है पीएसएलवी का। और जो है प्रॉब्लम्स थर्ड स्टेज पर डेवलप हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। तो पीएसएलवी एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो नियर वर्टिकल क्लाइंब देती है अबाउट 50 टू 60 किलोमीटर्स तक की। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ होता है। सेकेंड स्टेज जो है उसमें विकास इंजन का यूज़ किया जाता है, इंडिजिनसली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल की स्टेज है ये। और रफली 220 से 250 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक रॉकेट को लेकर जाती है। जो थर्ड फेज़ जो होता है या थर्ड स्टेज होता है, सबसे क्रिटिकल होता है। इसमें व्हीकल जो है वो ऑलमोस्ट इंटायरली हॉरिजॉन्टली मूव करता है सब ऑर्बिटल पाथ पर, और सॉलिड फ्यूल बर्न करके वो ऐसा करता है। ठीक है। और इसमें रैपिड एक्सेलरेशन अचीव की जाती है। पीएसएलवी रॉकेट जो है वो सॉलिड फ्यूल को बर्न करके ये अचीव कर पाता है। फोर्थ स्टेज जो होती है वो लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज होती है। ये स्टेज बेसिकली सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए होती है लो अर्थ ऑर्बिट्स पर। ठीक है। जो थर्ड स्टेज है वो बहुत ही डेलिकेट फेज होता है। अगर रॉकेट फेल हो जाता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी अचीव करने में, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर सॉलिड फ्यूल बर्न होकर गैस में कन्वर्ट होता है। हाई प्रेशर गैस जो है वो एग्जिट हो जाती है एक नोजल के थ्रू। और अगर हाई चैम्बर प्रेशर जो है, जिससे ग्रेटर थर्स्ट और एक्सेलरेशन मिलती है, अगर यहाँ पर कोई भी लीकेज हो जाए
तो जो है या कोई भी फॉल्ट हो तो ये एक्सेलरेशन नहीं हो पाती और जो है रॉकेट स्पीड नहीं अटेन कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता ऑर्बिट, और फिर क्रैश हो जाता है। लास्ट ईयर का फेलियर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को एट्रीब्यूट किया गया था और कहा था कि लीकेज की वजह से जो है प्रेशर रिड्यूस हो गया। स्पेस मिशंस में लिटरल मार्जिन फॉर एरर होता है और फेलियर्स अनकॉमन नहीं है ग्लोबली, लेकिन बैक टू बैक अगर फेलियर्स होंगे तो पीएसएलवी की जो है क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चंस उठेंगे। पिछले 6 में से 3 मिशंस फेल हुए हैं इसरो के, एक अनयूजुअली हाई फेलियर रेट है। पीएसएलवी एक की रेवेन्यू जनरेटर है इसरो के लिए, तो एक उसकी रिलायबिलिटी जो है अगर हर्ट होगी तो क्रेडिबिलिटी और फाइनेंसेस दोनों प्रॉब्लम में आएंगे। लेकिन इसरो की हिस्ट्री है कि वो रिकवर कर लेता है क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस, और उसकी वजह से हमारे को होप है अभी भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले जो फेलियर की एनालिसिस की कमेटी की रिपोर्ट थी वो इंटरनल रख के इसरो ने कोई भी एक्सटर्नल स्क्रूटिनी अलाउ नहीं की, ताकि कोई करेक्टिव मेजर्स या रिटर्न टू फ्लाइट क्राइटेरिया उन्हें मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल सेक्रेटरी जो है सीबीआईसी के, उन्होंने इनाग्रेट किया है इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे अगरतला त्रिपुरा में। तो आइस गेट क्या है, 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल पोर्टल है ये इंडियन कस्टम्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का। ये प्रोवाइड करता है ई फाइलिंग सर्विसेज टू द ट्रेड कार्गो कैरियर्स एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स। सर्व करता है एज अ सेंट्रलाइज्ड हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस बिटवीन इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी। और ये मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेड यूजर्स को इंडियन गवर्नमेंट के कस्टम्स डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करने का। और ये इवन मल्टीपल पार्टनर एजेंसीज जो गवर्नमेंट की हैं उनको भी इंटरनली लिंक करता है। कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसीजर्स, ताकि एनहांस हो सके ट्रेड फैसिलिटेशन और प्रमोट हो सके ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो आइस गेट और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंटीग्रेशन हुई है उसको, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्रिटिकल कस्टम्स डेटा एलिमेंट्स को के ऊपर फोकस है। रियल टाइम बाई डायरेक्शनल एक्सचेंज ऑफ डेटा होगा आइस गेट और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से, और इससे अर्ली रिस्क असेसमेंट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन मांगा है क्योंकि शुगर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। तो ये जो है NFCS है क्या, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर के लिए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ये, और पार्टिसिपेट करता है ये शुगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्रमोट और सेफ गार्ड करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, और फंक्शन करता है ओवरऑल गाइडेंस में इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। CSIR के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एस्टैब्लिश की है नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, जो कि टेस्ट और कैलिब्रेट करेगी इंस्ट्रूमेंट्स को जो एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्रेडिबल डेटा देगी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए। ये CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ही लोकेटेड होगी न्यू दिल्ली में, और ये MSME स्टार्टअप्स या इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स जो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी लो कॉस्ट पर लाना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। CSR तो आपको पता है कि R&D ऑर्गेनाइजेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, प्रमोट करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टेक्निकल असिस्टेंस देती है इंडस्ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि वो कंसिडर करे कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स को एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजास्टर लिंक्ड लॉसेस। तो ये इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ट्रांसफ़र कर देती हैं फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स फ्रॉम द बॉन्ड इशूअर टू द कैपिटल मार्केट। तो ये एक यूनिक हाइब्रिड इंश्योरेंस कम डेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है इंश्योरेंस कवर को इनटू अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी। अभी जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन बॉन्ड्स क्या होता है, जब सोवरेन गवर्नमेंट्स इशू कर देती हैं प्रीमियम पे करके, तो ये जो है इंटरमीडियरीज को पे के थ्रू इशू किए जाते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या ADB हो, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स इनको परचेज करते हैं, और इन केस ऑफ एनी डिजास्टर अकरेंस तो ये जो उसका पैसा है वो इस्तेमाल करके डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिको और फिलीपींस काफ़ी इसका यूज़ करते हैं अगेंस्ट डिजास्टर लिंक्ड लॉसेस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DRDO और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किए हैं सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। ये इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड है बाय DRDO। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है,
और एक इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर और इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है, और मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है फ्रॉम ट्राईपॉड माउंटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भद्रकाली इंस्क्रिप्शन। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भद्रकाली इंस्क्रिप्शन एक की 12th सेंचुरी रिकॉर्ड है जो कंफर्म करता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल और पैट्रोनेज जो सोलंकी डायनेस्टी ने दी है उसे। तो भद्रकाली इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रभास पाटन गुजरात में लोकेटेड है ऑन द वॉल ऑफ भद्रकाली टेम्पल। इसको कार्व किया गया था 1169 सीई में, और ये अभी करंटली प्रोटेक्टेड है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ गुजरात द्वारा। ये मेंशन करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल इन और ऑल 4 युग। तो ये हिस्टोरिक भद्रकाली इंस्क्रिप्शन जो है रिफ्लेक्ट करती है डिवोशन ऑफ सोलंकी रूलर्स एंड स्कॉलर्स लाइक भाव बृहस्पति। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is unilateral use of force and international law. This topic is important for your international relations. So recent unilateral military actions by the US have reignited global debate on violations of international law and the weakening of UN-led multilateral order. So international law is founded on the principle of sovereign equality of states and prohibition of force in interstate relations, and these principles have been codified after the Second World War through the UN Charter. UN Charter explicitly prohibits the threat or use of force against territorial integrity or political independence of any state, except when this force is authorized by UN Security Council or when it is under the right to of self-defense. But despite this legal framework, powerful states have been carrying out military interventions outside these exceptions. For example, the recent US military action against Venezuela represents a significant departure which has been established by international legal norms. So, operation was carried out without authorization from the UN Security Council. As such, it constitutes a direct violation of the UN Charter. It also undermines the principle of non-intervention in domestic affairs. By forcibly intervening in the political leadership of a sovereign state, this operation also challenges the legitimacy of multilateral institutions. Okay, the current international system reflects a weakening of traditional balance of powers mechanism. During the Cold War, the bipolar structure ensured that no single power could act. Because at that time there were two competing superpowers, they acted as a deterrent against unilateral military action. That we saw how this could balance the during the this could balance both sides during the Bangladesh Liberation War and even Yom Kippur War. But after the collapse of Soviet Union, the global system has transitioned into a largely unipolar order led by US. So a notable feature of the contemporary US foreign policy has been increasing reliance on preemptive and preventive military action, and this rests on broad claims related to terrorism, weapons proliferation, or transnational crime. In the Venezuelan case, the stated objective of countering narco-terrorism appears legally tenuous. Instead, strategic and economic considerations were at play, particularly the access to natural resources. The repeated bypassing of international legal norms can have serious implications for global governance. It weakens the authority of the UN, normalizes the unilateralism, and sets dangerous precedents for other powerful states to follow. While Russia and China may form tactical alignments, structural differences limit the prospects of a stable multipolar order in the near term. Okay, for India, these developments highlight the risks inherent in a weakened rules-based international order. India has traditionally relied on international law and multilateralism to protect its, say, sovereignty and security interests. The current global environment underscores the need for India to strengthen its strategic autonomy, invest in its defense industrial base, and pursue diversified partnerships. Okay. So the next topic is setback for PSLV. This topic is important for your science and tech section. So ISRO's first launch of the year ended in a failure when the PSLV C-62 mission carrying 16 satellites failed to reach its intended orbit. This marks the second consecutive failure of PSLV, and the problems developed during the third stage, which is critical for achieving orbital velocity. So we know that PSLV is a four-stage launch vehicle. The first stage handles the liftoff and near vertical climb to about 50 to 60 kilometers. It uses a solid propellant. Uh,
The second stage is the indigenously developed Vikas engine and liquid fuel. The second stage takes the rocket to roughly 220 to 250 kilometer altitude. And the third stage, the vehicle moves almost entirely horizontally on a suborbital path. It burns the solid fuel and it aims to achieve rapid acceleration. The PSLV rocket burns solid fuel to achieve this. The fourth stage is the final stage, which uses liquid propulsion to precisely place satellites into their designated low Earth orbits, typically between 250 and 2000 kilometers. The third stage is one of the most delicate phases of the launch. If the rocket fails to achieve the required velocity, it cannot sustain orbit. In this stage, solid fuel burns and turns into gas. The high pressure gas exits through the nozzle, and the higher chamber pressure results in greater thrust and acceleration. And any pressure drop due to any leakage or fault could reduce thrust, preventing the rocket from attaining the speed needed to maintain the orbit. Even the last year failure was attributed to a manufacturing defect which caused leakage and reduced pressure in the combustion chamber. Space missions already allow a little margin of error, and while failures are not uncommon globally, back to back setbacks involving the trusted PSLV are a serious concern for ISRO. With three of its last six missions failing, ISRO faces an unusually high failure rate. PSLV is a key revenue generator through commercial and foreign launches. Questions over its reliability could hurt both credibility and finances, and ISRO's strong history of recovery from crisis still offers hope. Uh, so the next topic is Indian Customs Electronics Gateway. This topic is important for your governance section and economy section. Recently, Special Secretary of CBIC has inaugurated the Indian Customs Electronics Gateway at the integrated checkpost of Agartala, Tripura. So, Indian Customs Electronic Gateway was established in 2007. It is the national portal of Indian Customs of CBIC, and it provides e-filing services to the trade, cargo carriers, and other trading partners. It serves as a centralized hub for all trading interactions between Indian customs and the trading community. It is the main infrastructure for connecting trade users with the Indian government's customs department. It is internally linked with multiple partner agencies including RBI, banks, DGFT, DGCIS, Ministry of Steel, etc. It collectively contributes to the streamlining of customs procedures, enhancing trade facilitation, and promoting transparency. With the integration of IceGate with land port data management system, this would help us in early risk assessment, and it would offer a real-time bi-directional exchange of data between IceGate and land port management system. So the next topic is National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited. This topic is important for your economy section. So National Cooperative Sugar Federation has sought government intervention amid falling sugar prices. So this Federation of National Cooperative Sugar Federation was established in 1962 to build a strong and vibrant cooperative sugar sector in India. It is deemed to be under the Multi-State Cooperative Societies Act. It participates in sugar policy formulation, promotes and safeguards the collective interest of its members, and it functions under the overall guidance of an elected board of directors. So the next topic is National Environmental Standard Laboratory. This topic is important for your governance section. So recently the CSIR National Physical Laboratory established the National Environmental Standard Laboratory. So this has been established to test and recalibrate instruments used for air pollution monitoring systems to provide credible data for the National Clean Air Program. So it will be located at the CSIR lab of New Delhi. So it is expected to help the MSMEs, startups, and indigenous manufacturers to demonstrate the product quality at lower cost. And CSIR, we all know that it is an R&D organization working in diverse fields of science and technology. It facilitates service, maintenance, and testing and calibration of instruments. It promotes human resource development in areas of instrumentation and offers technical assistance to the industry as well. So the next topic is catastrophe bonds. This topic is important for your economy section. Kerala government has asked the union government to consider instituting catastrophe bonds or CAT bonds as a protection against disaster-linked losses. So these are insurance-linked securities which transfer the financial risk from natural disasters from the bond issuer to the capital market. They are unique hybrid insurance cum debt financial products which transforms insurance cover into a tradable security. So
At present, the financial risk is fully borne by the state or central governments. The bonds are sponsored by sovereign governments who pay their premiums, and they are issued through intermediaries like World Bank or Asian Development Bank. They are purchased by global investors, including pension funds, hedge funds, and Mexico and Philippines have been using these bonds to protect themselves against disaster-linked losses. So the next topic is man-portable anti-tank guided missile weapon system. This topic is important for your security section. So DRDO and Indian Army have conducted successful trials of indigenous man-portable anti-tank guided missile weapon system. It is indigenously designed and developed by DRDO. It is the third generation fire and forget missile, an imaging infrared homing seeker, all electric control actuation system, advanced fire control system, tandem warhead propulsion system are some of its features. This missile can be launched from a tripod mounted system. BDL and BEL are the development cum production partners for this missile system. So the next topic is Bhadrakali inscription. This topic is important for your art and culture section. So the Bhadrakali inscription is a key 12th century record which confirms the history and development of Somnath temple and patronage given by the Solanki dynasty. So this inscription is situated in Prabhas Patan of Gujarat, specifically on the wall of Bhadrakali temple. It was carved in 1169 CE and is currently protected by the State Department of Archaeology. It mentions the construction of Somnath temple in all four yuga, and the historic Bhadrakali inscription reflects the devotion of Solanki rulers and scholars like Bhava Brihaspati. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.